Welcome back to our lecture series of metric spaces. We were discussing topology in metric space. इसी कड़ी में हम लोग relativization and subspaces को इस लेक्चर में देखेंगे. When we discussed metric space, तब हमने subspace के concept को touch किया था. And in this lecture, I am going to define कि subspace का meaning क्या है और ये subspace हमारे relatively open और closed set में किस तरीके से role play करते हैं. ठीक है? So let us start this lecture by writing the definition of subspace, and I think हमने इस concept को बहुत बार already use कर ही लिया है. So this is formal to write the definition of subspace. So let we are having x comma t be a metric space. Then for this metric space we are going to define subspace. Okay, and y a non-empty subset of x. ठीक है? If this d y, that means restriction of d to y, denotes the restriction of the function d to the set y times y, then dy is a metric for y, and y comma dy is a metric space and considered as subspace of x comma t. Okay, so this is the definition of metric space. Now we have some questions कि अगर हम इस metric subspace को लेकर एक नया subset बनाएं, जैसे कि if we think about another subset of y and this y is subset of x. अब हम बात कर रहे हैं इस subset z के बारे में. अगर किसी सेंस में if this z is closed in y, क्या हम conclude कर सकते हैं कि this z is also closed in x, and same thing for the open also. तो हम अभी आगे के कुछ एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि ये थिंग हमेशा ही ट्रू हो ऐसा नेसेसरी नहीं है. सो वी रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा कंडीशन फॉर बोथ y एंड x फॉर द रिलेटिवाइजेशन, दैट इज कि अगर z y में क्लोज है देन दिस विल इम्प्लाइज दैट दिस z इज क्लोज्ड इन x आल्सो विद दैट दोज कंडीशंस. ओके, and if z is open in y, then with those conditions that z will be open in x2. Okay, so we are now coming to a question that suppose we are having this one. Okay, so if z is subset of y is subset of x, then we may speak z being open and of course respectively closed relative to y as well as open to x. ठीक है, we are going to identify this fact only. Okay, so our question is that it may be possible, let me write this question first, that it may be
possible that Z is open, and you can say respectively closed subset of Y, but not of X. So we required some condition so that it may happen. Okay, so if you want to see कि ये कैसा हो सकता है, so you can see, for example, let us consider the metric space X when X is R square. For example, we are consider X comma D, where X is R square and D2 is D2 of X comma Y is equal to square root of x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square, and this is we have square root, and this is defined for x that is equals to, you can consider x1 comma x2 and y that is equals to y1 comma y2 in R square. ठीक है, y comma dy. Okay, this dy is restriction of d2 on this y, where you can see where this y is set of real. ठीक है, and of course this real number in the sense of R square, when we look it as a subspace of R square, then we can see it as x comma 0, where this x is coming from R. Okay, and if you want to see how this dy is working, then you can see dy of x comma y, that will be equals to square root of, here we have x1 is x and y1 is y, and these two are 0, so you can see we have x minus y square root, and that is obviously same as the usual method. Okay, we are taking the non-negative values from this one. Now if you want to see, then you can see then y comma dy is a subspace of x comma d, right? Now we are going to consider a subset of this. So let us define this z is being as you can see we are considering x comma 0, where this x is running from 0 to 1 open. अब देख पा रहे हैं we are talking about open 0 to 1 interval. Okay, then is an open subset of y. Okay, so you can see z is open in y, but what about in x? But z is not open in x. Okay, here you can see also, अगर मैं यहाँ पर रियल लाइन की बात करूँ, and we have this one also, ये हमारे लिए R square है. ठीक है, अब जो y है this is R square, we are talking about R square, and suppose this is our given y. Okay, this is our y. Now this z is given like from this point is 0, so you can say this open interval and say this is 1. So we are talking about 0 to 1. This is our z. This complete line excluding 0 and 1,
that represent the set Z. Now you can see अगर मैं Y में ही बात करूँ, इसका मतलब हम इस ओपन इंटरवल को Y में देख रहे हैं, तो Y में तो ओपन इंटरवल एक ओपन सेट ही है। बट अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूँ और इस पर कोई भी हम एक ओपन बॉल कंस्ट्रक्ट करें, सपोज इफ आई पिक दिस पॉइंट, सपोज मैंने 1/2 पॉइंट पिक किया। अब आर स्क्वायर में तो बॉल हमेशा इस तरीके का ही दिखेगा। अगर मैं इसे D2 मैट्रिक की बात करूँ, आप देख पा रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम बॉल बनाए, चाहे कितनी भी स्मॉल रेडियस का, तो उस बॉल में हमेशा ऐसे पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे जो इस 0,1 इंटरवल से बाहर के होंगे। और आई कैन से हम इस 0,1 इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी ओपन बॉल बनाए तो वो इस 0,1 इंटरवल में कंप्लीटली कंटेंट नहीं होगी। अगर नहीं होगी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और इस केस में ये एक ओपन सेट नहीं है आर स्क्वायर। ठीक है, तो यू कैन सी हमारे पास एक ऐसा सेट है Z विच इज ओपन इन Y, okay, in subspace, but not open in R square, which is the our parent metric space. Okay, so here you can see if I write this all these things, and you can see, so as you can see is when Z is considered as subset of X, then for no point x, 0 in Z is an interior point, right? Interior point of Z. ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज जब भी हम ओपन बॉल या फिर कोई भी नेबरहुड की बात करेंगे, बिकॉज एनी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x, 0 इन x is the ball, open ball that we know x as x, r, and where this r is greater than 0. Okay, r square में ऐसा ही दिखेगा. You can write this as x, 0. Okay, आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं. ठीक, which is not contained in Z, and thus you can see thus Z that is equals to x, 0, where we have this restriction on x is open in y that is equals to x, 0, where x is coming from R but not in x equals to R square. ठीक है, सो ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है जहाँ पर सबसेट में ओपन या क्लोज हो बट मैट्रिक स्पेस में ना हो, और इसका रिवर्स भी हो सकता है कि पेरेंट मैट्रिक स्पेस में क्लोज या ओपन है बट उसके सब स्पेस में नहीं है. तो इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए वी विल हैव सम स्टेटमेंट्स, एंड टू एस्टैब्लिश दोज स्टेटमेंट वी रिक्वायर्ड अ लेमा. सो नेक्स्ट आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ लेमा, एंड इट सेज दिस इज लेमा 2.2.1. It says let x, d be a metric space and y a subspace of x, and now let z be in y and r is greater than 0. Then what we have, then this is the conclusion that any ball in y center at z with radius r is can be seen as ball in x center at z with radius same radius r with the intersection
intersection y. Okay, this is important lemma for this particular lecture. So first let me write the geometry for this. Suppose we have this scenario. Okay, हमारे पास मान लेते हैं कि ये x रहा हो, okay? और ये y है. This is our y, and now we are talking about a point. Suppose this is our z point, and we are talking about this ball. Now when you think that this ball containing the points of y, then you can see this ball as s subscript y z, r. और जब आप इस बॉल को x में देखेंगे तो उस केस में यू कैन सी एस x z, r. ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब भी हम इस y में किसी पॉइंट पर बॉल को कंसीडर करेंगे तो दैट बॉल इज द इंटरसेक्शन. नाउ यू कैन सी दिस. ओके, नाउ लेट मी राइट दिस एज इन अ डिस्टिंक्ट वे. सपोज वी हैव दिस इज आवर x, सेम x, एंड दिस इज आवर y, सेम y. ओके, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इसमें कोई पॉइंट z है तो सेम पॉइंट इसमें भी कोई z रहा होगा. अब हम इन पर बात करते हैं कि इस पर हमने एक बॉल बनाई. सपोज दिस इज r, एंड दिस इज r एस x z r, एंड जब हमने इस पर बॉल बनाई एक तो उसको हमने बोला एस y z r. ठीक है, थ्योरम से ही जब आप y जो कि x की एक सबस्पेस है उसमें किसी बॉल को कंसीडर करेंगे so that ball is nothing but this ball and take the intersection with this y. okay, तो जो भी आपका इस बॉल और y के साथ इंटरसेक्शन आएगा that ball is nothing but this ball. Exactly this red ball represent this intersection and now you can see this scenario. okay, so आप इसको combined form में भी देख सकते हैं इस तरीके से. okay, so I hope you understood that this sy represent the ball in y, this x represent ball in x. okay, so अब ये बॉल इन x और बॉल इन y का मीनिंग क्या है कि जब हम बॉल को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं d of x, y is less than r, राइट. तो जब हम यहाँ पर d मैट्रिक की बात करेंगे तो x के लिए तो गिवन मैट्रिक d का ही हम यूज करेंगे, बट फॉर द y जब हम y के लिए बॉल को डिफाइन करेंगे तो उस केस में हम इस d के रेस्ट्रिक्शन को यूज करेंगे. ओके, सो देयर इज ओनली डिफरेंस इन द रिप्रेजेंटेशन. सो नाउ लेट मी write the proof. Now we are able to write the proof. So we have that. Just look at these diagrams. So we have that whenever you want to identify as x, center at z, r, intersection with y. So you can see we are considering अब ये जो है this ball, this is in x. okay, तो जब हम इसको x में देखेंगे तो ये बॉल क्या है, वी आर कलेक्टिंग ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द मैट्रिक स्पेस x जिसके लिए d x, z is less than r, right? And then this is our ball, this is the definition of ball, and then take the intersection with y. okay, now you can see हम कह रहे हैं कि इस x का इस पार्ट से हमें इसके साथ हमने इंटरसेक्शन लेना है. ओके, इसका मतलब जो एलिमेंट इस सेट में है वो इस y में तो रहेंगे ही रहेंगे. तो जो एलिमेंट हम x से कलेक्ट कर रहे हैं दिस इज सेम एज टू कलेक्टिंग द एलिमेंट फ्रॉम y, राइट. So if I use this intersection for this set, then I can say when I'm going to collect the elements from x and then I want to take the intersection with y, then this is similar to take the elements from y with this condition. okay, so this is exactly equal to collecting elements x from y because we require the intersection. तो जो एलिमेंट x से बिलोंग करेंगे वो ही y से करेंगे. So in place of x you can use y such that we have that d of x, z is less than r. Now you look at this definition. Is it a ball whose center is x, whose radius is r, but now this is in the space y. So we are denoting this as s y. This is the center of ball and this is the radius of this ball. Okay, and why we are writing this, since this y is a subset of a subspace of x. So this is what we are having
a relation between bole of the parent metric space and bole of its subspace. Okay,